Once again, good evening to all of one. Good evening to IIT Bombay, to the literati, to the Vani, and a warm welcome to our guest, Kunal Marathe. Hailing from Indore, Kunal Marathe is a screenwriter and novelist based in Mumbai. After starting his career in hospitality industry and spending significant years in publishing and book marketing, he is now a full-time writer in Bollywood. His novel Turkey has been adapted into the MX original series Indori Ishq, which screenplay and dialogues are also written by him. Our second guest for the evening is Sankhadeep Mondal, sir. Sankhadeep is an author, motivational speaker, educator, and entrepreneur. He has had a stellar academic credential. After graduating in history, he started his journey in the world of business and finance. He has also pursued his passion for music, and he has been trained under the tutelage of the legendary Pandit Kumar Bose. He is a persuasive speaker, and the gift of the gab has won him many debate accolades. He has debuted as an author with his book Mastering Your Mind. Our third guest is Jyoti Jha. Jyoti Jha is the proud winner of the Right India, TUI Right India Season 3. And HR turned Jyoti Jha is an MBA by qualification and has been associated with corporates like Infosys and Whirlpool in the past. After almost a decade of globetrotting, she had pursued a compelling passion of expressing through words and embarked upon the journey of exploring the field of literature. A literary critic, columnist, and a lyricist, she has been proud panelist and guest speaker in talk shows at various prestigious institutions like IIT BHU, IIT Delhi, and IIT Jammu. She has been invited as an esteemed guest speaker at a unique talk show, The Lit Talks, on a reputable OTT platform. Her debut Hindi novel, Anandi, has been featured in the Pune International Literature Festival. And our last guest for the evening is Vikastra Saxena. Vikastra Saxena is the founder of the Literia Insight and senior editor at the Literary Times. And he is also the brain behind the whole Lit Tour. So a warm welcome to you, sir. So my first question would be to Kunal, sir. Yes. Am I audible, sir? Yeah, perfectly audible. Okay, so my first question to you is that how means hailing from hospitality background and to a author or a novelist and then a screenwriter. So how has this been transition? Yeah. Actually, hospitality was just what we say in perfect Hindi is majboori. So I always wanted to be a writer. In fact, I was in ninth standard in Indore, and I was among the things that kids do. So I ran away from Indore to Mumbai to become a writer. And Pretty I filmy was story, by very the way. young at that age, so a lot, man, a lot. I had done a lot of filmy stuff. So in the morning, I called my mom from a STD PCO. And वो फिल्मों में तो बहुत अच्छा लगता है running away from home and all, but जब when really it happens तो तब फिर then we realize it's stupidity. So next day I came back to Indore. Like my father, he came to Mumbai and he took me back. So I always wanted to write. In fact, when I used to work in hotel, I was in Taj. So my duty used to end at 1 in the morning, 1 a.m. Oh. And from 1:30 to 5 or 6 in the morning, I used to sit in a Chabudra kind of stuff. There is this open library in Nathalal Parik Marg in Mumbai in Kolaba. So I used to sit there and I used to write. So writing was always what I wanted to do. Hospitality and everything, we are from a middle class background, so we have to keep doing something to earn our bread and butter. So hospitality was just a part of that. Okay. There's one question from Sankhadeep, sir. How have your varied background in finance and history has shaped you as a writer? Yeah, Sankhadeep. So am I audible? Yeah, sure. Yeah, Nitish, am I? Yeah. So, the various backgrounds that you're talking about, for instance, whether it's finance, whether it's history, like, for instance, if you are conscious about different things, that would definitely help you as a writer. So if you have understanding about different aspects and understanding about different topics, so, finance, even though it seems like these are various backgrounds and like sometimes it would seem like they are almost like conflicting, but they are not. They are very connected and they are not at variance. They work together, and by having an understanding of all of them, you will be able to form a kind of mindset that would give you a proper understanding about life, basically. If you have different kind of consciousness about different kind of topics, aspects, that very much helps you in terms of your writing. And that helped me, definitely. So that background part definitely was a big help. Particularly, as you said, history. I would tell you, for instance, there are different events which we learn about in history.
There something which is very stigmatized, like I believe the way history is taught at school, that is not, our understanding of history is very flawed. We have to understand history, like the events which have happened. So everything that could happen in your life, happened before. So if you have very good understanding about history, you would understand what happened before, what were the responses when that particular event happened, and what were the consequences as a result of those decisions that were made. So you can calibrate your actions today based on those learnings from history. So that helped me. Finance is similar. It teaches you about life. Life teaches you about finance. So they go hand in hand. So these various backgrounds help me immensely in terms of my writing. Definitely. Okay. Jyoti ma'am, there's the same question to you. How much did that help you to evolve as a writer after traveling to multiple countries? Yes. See, traveling teaches beyond books, as I have also mentioned in my travelogue around the world through my lens. So, and I'm a strong believer of that, because traveling overall, it teaches you and it helps you grow as a person. And the more you grow as a person, it reflects in your writing. You become better writer. That's what I believe. And it has personally happened to me, because since I have been to those places, I have lived there. So I have a first-hand experience of, meeting people, seeing their culture, knowing them, their food, the place itself. And so whenever I write a story, I have a setting in my mind. So I don't have to imagine. I'm just there. I just remember all those things and I can translate it into my writing. So it has definitely helped me as a writer and also as a person. So I think traveling is wonderful. It helps everyone, whether a writer or not, but it definitely helps if you're a writer. So because we also know that writers, they go to places, so to get that feeling and then portraying it in their writing. So luckily I have been to many places and I can show that in my writing already. And of course, there is no end. The world is a large place and there are so many places to see. So many more places to visit. विकास सर, आपके लिए सेम सवाल थोड़ा अलग तरीके से. हम लोग सभी जानते हैं आपने स्टोरीज लिखी हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स लिखे हैं. मैं बता दूं इनके बारे में, विकास सर के बारे में पहले, इज वन ऑफ द यंगेस्ट लिटरेरी क्रिटिक ऑफ इंडिया. आपने लिरिक्स लिखे हैं, आपने स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, आपने अभी तो कोई बुक क्यों नहीं लिखी? आई थिंक मैं ज्योति झा मैम, संदीप सर तो आज ही मिले हैं एंड कुणाल सर से ये सीख रहा हूँ कि बुक कैसे लिखी जाती है. Oh my God. तो आई थिंक अपना टाइम आएगा. अच्छा, चलिए. अच्छा, अपने कुणाल सर की ओर जाते हुए, आपकी बुक, मतलब मैं जब देख रहा था आपका प्रोफाइल, जब मैं रीड कर रहा था ऑब्वियसली मीटिंग से पहले, बुक का टाइटल है ठरकी, और ठरकी का हिंदी में मतलब थोड़ा अलग होता है, विच वी से इन सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, कैरेक्टरलेस. तो ये टाइटल क्यों? सबसे पहले तो मेरे ये जानना है. एक्चुअली ठरकी का एग्जैक्ट मीनिंग इज वुमनाइजर. ओके. So if you go, so I mean, in today's time we can't say who is characterless and who has got a good character, but basically if you go meaning wise, Turkey means a man who needs a lot of women in his life. But exactly. But isme na, it is the character is opposite of the word Turkey. But यहाँ पे even in the web show Indori Ishq and even in the book there is this line in the end where one of the characters he calls our guy and he says it's not just the men who are Turkey, even women are. So my female protagonist is actually a Turkey. Very controversial statement on a public platform, by the way. Exactly, but that's the fact. I mean, just because someone belongs to a particular sex, you cannot justify them or you can defame them. So a person is person, whether a man or a woman. या आपको सही बात है. लड़का हो या लड़की हो, औरत हो या आदमी हो, आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर exactly डिफाइन नहीं कर सकते. Exactly. And in fact, the laws in India, that was one of the reason why that book was written. क्योंकि इंडिया में ऐसे laws है. I mean, one thing a guy does and the same thing a girl does, so the punishments or the treatment is different for both of them. So yeah, so anyway, that is a different topic. But the Turkey का जो justification है,
for the book is it is the character that Turkey is the word for the female protagonist. Okay, quite revealing. Yeah, अच्छा, एक exactly. सवाल मेरा और था आपसे, बुक जी का नाम ठरकी, अग्रीड, जी वेब सीरीज का नाम इंदौर इश्क, दोनों में कोई क्या मतलब, क्या ये क्यों चेंज? नहीं, हाँ नहीं, उसके पीछे भी बहुत अलग कहानी है. द थिंग इज कि वेब सीरीज का नाम भी ठरकी होना था. हाँ, सो किसी भी वेब शो या मूवी का नाम लिखने के लिए दिस इज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इम्पा. तो उसमें आपको टाइटल रजिस्टर कराना पड़ता है. So someone had already registered Turkey, so we could not get that that Okay. particular name. Okay. Exactly. And उसके बाद में I was writing one more show whose title was Indori Ishq. So Indori Ishq was supposed to be another story. तो Okay, so हम now लोगों को when we कोई are going अच्छा to टाइटल see, मिला नहीं, तो सबने अपने अपने, हाँ, बट फिर सिंस वी नीडेड अ टाइटल, सो फिर हमने इंदौर इश्क भी, क्योंकि वो इंदौर की स्टोरी है तो काफी रेलेवेंट जा रहा था, तो फिर हमने इसको इंदौर इश्क नाम दे दिया. अदरवाइज अगर टाइटल अवेलेबल होता तो इसका शो का नाम ठरकी होने जा रहा था. तो जब वेब सीरीज की बात हुई तो म्यूजिक की बात करते हैं. संखदीप सर का काफी अच्छा है. संखदीप सर, आर यू ओके इन हिंदी or should I go with English? I think English should be better. English would be better. Okay. Yeah. So you are, you have also, a background in music. Okay. You have a background in music. So which form of music do you like the most, first of all? Yeah, so I like all forms of music. The background that I have is of classical music. So I've learned tabla from my Guruji, Pandit Kumar Bose. And so that gave me good insight and very first-hand experience into the world of classical music. Okay. I got to meet a lot of musicians from there who were classical music. Okay. And that was something which was very, very enlightening for me. But I like all forms of music. Music is a form of entertainment. So if something I like, if I don't really, it doesn't matter to me, like if it belongs to 80s or 90s, or if it is a very modern song. So it doesn't matter. If I feel good after listening to a particular music, I think that is a form of music I like. Of course. I think you have, already answered my second question, which I was about to ask, that, what aspect of music you had been missing in the modern era? Because there had been a lot of criticism these days that, okay, there were good old days where the music was, soothing to the ears. But today we have that, some people are critical about the rap songs. Some people are critical about this, upbeat songs. So what is your take on this? Yeah, so definitely you have different forms of music, as I told you. And previously, music used to be a lot more driven by your own talent, I would say. I mean, I would put it very bluntly. Today, it is a combination of both talent and technology. So people are banking on technology to create good music. But if you are able to create a good music which can entertain the audience, which is the objective of one of the major objectives of creating a music, I mean, the job is done and I have nothing against it. Okay. So definitely there is a section, even I have seen them very up close, who rail against this form of music. But, one of the objectives is, as you just said, music, we are listening to it, we want to feel good. And if there is a music which has been completely predicated upon technology, but it makes us feel good, I think that is also as good a music which has been sung by some very talented individual from the 80s or 90s. We lost a legend, and it was a very sad day for me, but for everyone in India. But definitely, I mean, all forms of music, to me is acceptable, and I embrace all forms of music. If it helps me to, definitely. That's what I would say. Your voice is, breaking. Actually, I think there's a low bandwidth on your side. Am I audible right now? You're audible, but your voice is cracking. Okay, now I think there's a right signal. Okay, coming to your book, Mastering Your Mindset. There are a lot of books, on mindset, thought process, the self-help books, the motivational books. So how do you think you have written differently from the other ones? So definitely, when I went into writing this book, I myself read a lot of books which were pertaining to this kind of topic, personal development, self-help. And I found like they
probably there are some books which deal with only the mindset part. For instance, they talk about only the subconscious mind. There are some books which talk about and deal with very important aspects like financial freedom, okay, which is a big part of personality development. Believe it or not, I mean, but you have to be financially independent. That is a part of personality development. I believe in it. So I combined all of them together in a nutshell so that people don't have to go through each of those books, individually. They will get that in a nutshell. And this is the feedback that I have received from my readers, till date, that they have found it to be very helpful, as they could skip a lot of books and could read this particular book and get a lot of help out of it, because it deals with a different gamut, but a lot of expansive gamut of personality development. It just doesn't pick up one particular niche. It is a very expansive, capacious thing that the book deals with. So in that sense, it is very distinctive. That has been the feedback from the readers also. Oh, that's great. The feedback from the readers are generally, encouraging. Okay. How do you think, as you said that, I have, combined a lot of things, even in my book, so that people do not have to jumble up, here and there, to read a lot of books, because even today, reading is something which is disintegrating day by day. So what do you think? How much writing has evolved you as a person? Tremendously. I mean, immensely. Writing has evolved me as a person immensely, definitely, because when you are writing a book, you are going through so many things. You are going through different experiences, because you have to put out something, the content that you have to be putting out in front of the readers. It has to be based on very concrete facts. So you have to go through a lot of contents yourself. So I did go through a lot of contents myself. That was a very extraordinary journey for me. I changed a lot during that process. I did not realize when I started writing the book that I would change that much. But when I finished it, I was a changed person. So because my book pertains to the realm of lifestyle, personality development, financial freedom, I had to analyze a lot of these topics. I had to experiment about a lot of these topics, and that helped me immensely as a person. So writing the book was a very seminal event in terms of my own transformation as well. That is something that I would definitely. एक क्वेश्चन मेरा विकास सर से भी था. विकास सर जी, आपने कहा कि आपने कुणाल सर से और ज्योति मैम से लिखना सीख रहे हैं, आपने स्क्रिप्ट्स लिखे हैं, लिरिक्स लिखे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बुक लिखना ज्यादा मुश्किल है, या ज्योति मैम और कुणाल सर बताएंगे सर बुक लिखना ज्यादा आसान है या स्क्रिप्ट लिखना ज्यादा आसान है? कुणाल सर. See, it is I don't think it is about easy or tough, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं. It depends, I mean, what you are comfortable with. कुछ लोग बुक्स इजीली लिख लेते हैं, कुछ लोग स्क्रीन प्ले इजीली लिख लेते हैं. मेरे लिए स्क्रीन प्ले इजी लिखना मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा इजी लगता है, बिकॉज आई एम मोर इनटू डायलॉग्स एंड ऑल. ओके. तो मैं स्क्रीन प्ले ज्यादा प्रेफर करता हूँ. बट द थिंग इज कि द गुड सॉरी प्लीज कंटिन्यू. नहीं कोई इशू नहीं. बट द थिंग इज कि बुक लिखने में आपको बहुत फ्रीडम मिलता है. आई मीन, यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, योर ओन कैरेक्टर्स, योर ओन सिचुएशंस. स्क्रीन प्ले लिखने में आपका क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं लूज हो जाता है, क्योंकि वो आपके ऊपर प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, टेक्निकलिटीज होती है, वीएफएक्स होता है, बजट होता है. तो कहीं ना कहीं इफ यू वांट टू हैव योर क्रिएटिव फ्रीडम, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर बुक इन दैट सेंस. चलिए, थैंक यू. विकास सर आप बताएं. नीतीश, आई थिंक मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट को तभी लिखा जा सकता है जब आपके पास ऑलरेडी एक स्टोरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं स्क्रिप्ट स्टोरी से ही निकल कर आता है, राइट जी. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बुक जो है वो फर्स्ट इमेजिनेशन होता है ऑफ अ राइटर, ऑफ एन ऑथर, कि एग्जैक्टली बेस क्या है, स्टोरी का बेस क्या है. बेस से फिर हम एक जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम किसी भी बिल्डिंग को जब कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो उसका बेस रेडी किया जाता है, राइट. तो कहीं ना कहीं जो स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले होता है उसका बेस एक स्टोरी होती है. तो आई थिंक स्टोरी लिखना किसी के लिए वो डिपेंड करता है कि जो ऑथर लिख रहा है उसका इमेजिनेशन लेवल क्या है, और कहीं ना कहीं उसके बेस पर हम स्क्रिप्ट को किस तरह से क्रिएटिव बनाना चाह रहे हैं, किस तरह से लिखना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली थीम पर डिपेंड करता है. तो आई थिंक दोनों चैलेंजिंग है और दोनों इजी है. जैसा आपने कहा, मुझे तो ज्योति मैम के लिए चैलेंज है, क्योंकि उनकी पहली बुक जो है
वो ट्रेवलॉग है, दूसरी बुक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, तीसरी नॉवेल है। मैडम चौथी कोई विधा बचती है साहित्य में? ये तो आप लोग बता। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग इट सो वेल। सो मुझे लगता है एज अ राइटर, इफ वी कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सप्लोरिंग, द मोर वी डू सो, द मोर वी ग्रो एंड वी लर्न एंड इवॉल्व। एंड देयर आर सो मेनी एवेन्यूज एंड देयर हैव बीन एंड देयर आर मोर इवन टुडे। तो जितना कुछ जो भी ट्राई कर सकते हैं वो अच्छा है। और जैसा आपने कहा ट्रैवलॉग, हाँ, और शॉर्ट स्टोरी हो या आनंदी हो, एक नोवेला हो, हर तीनों ही बुक में मेरी तीनों डिफरेंट जॉनर हैं, बट कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी टेलिंग टेक्निक तीनों ही बुक में दिखती है। तो आई थिंक मेरा वो एक है स्ट्रॉन्ग, वो जो कह सकते हैं लिखने का झुकाव वो स्टोरी टेलिंग की तरफ है। तो वो तीनों में ही दिख जाता है। तो आगे हाँ एक्सपेरिमेंट करती रहूंगी, जैसा कि लिरिसिस्ट भी बनी हूँ, वो भी एक ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है मैंने। तो अब आगे और भी काफी एवेन्यूज हैं। द मोर आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सप्लोरिंग, आई विल कीप इवॉल्विंग एज अ राइटर, आई विल कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। मैम वो जस्ट ट्राई नहीं था, वो लाइक अ धमाका, बूम बूम। एग्जैक्टली, ऑडियंस को काफी अच्छा लगा है वो गाना। एंड आई थिंक 1 मंथ में 10,000 प्लस लोगों ने उसको सुना है। तो सीरियसली वो बहुत अच्छा सॉन्ग है। Yes, definitely, and very honored to have been a part of that wonderful project actually. और सॉन्ग ने काफी काफी दिलों को छुआ है। तू है मैं हूँ। कुणाल, नीतीश, मेरा ही क्वेश्चन कुणाल सर से है। हाय कुणाल सर। हाय 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 ब्रदर। हाँ एग्जैक्टली, मेरा क्वेश्चन ये है, जब एक फिक्शन बुक पब्लिश हो जाती है, बुक पब्लिश देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में डेली बहुत सारे इंडिया के पब्लिशिंग हाउस हैं जो फिक्शन बुक पब्लिश करते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश पब्लिकेशन हाउस, राइट, एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। बट एक बुक पब्लिश हो जाने के बाद उसका स्क्रीन एडेप्टेशन तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो वे है, उसमें किस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। राइटर्स डिमोटिवेट भी होते हैं कहीं ना कहीं, कि अगर उन्होंने एक बुक राइट की है बट उसका कुछ हो नहीं रहा है, विजुअली कुछ आ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में एक राइटर क्या सोचता है। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में भी आए होंगे, टर्निंग पॉइंट्स आए होंगे। और जब आपका बुक इंदौरी इश्क पब्लिश हुआ होगा, उसके बाद स्क्रीन तक आने में जो आपको खुशी हुई होगी, तो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली, वो प्लीज हमें बताएं। और कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन लेवल जो आपकी लाइफ में आया है उस टाइमिंग पीरियड में, तो वो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, तो प्लीज टेल मी। यार देखो, इसका ना 2 तरीके हैं। या तो पहले मेरा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर हॉस्पिटल इंडस्ट्री आई रेन अ पब्लिकेशन एंड बुक मार्केटिंग फर्म फॉर सो मेनी इयर्स। तो मैं जब भी बुक्स के बारे में सोचता हूँ तो आई एम नॉट समवन हु जस्ट बिलीव्स कि बुक पब्लिश कर दी और फिर हो गया। तो आई बिलीव इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग। तो पहला तरीका तो ये है कि आप बुक को काफी कैची रखो और उसका टाइटल से लेके उसका कवर से लेकर और उसका प्रमोशन इतना करो कि वो खुद ब खुद किसी प्रोड्यूसर के पास, डायरेक्टर के पास या चैनल के पास चला जाए। जैसे मेरे साथ में ये हुआ है कि द प्रोड्यूसर ही फाउंड द बुक ऑन एयरपोर्ट, ही रेड इट एंड देन ही कॉन्टेक्टेड मी टू टेक द राइट्स। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि अगर आपको खुद जाना हो तो एक प्रोसीजर होता है, काफी एक फॉर्मेट होता है। और मतलब ये तो काफी लंबी चीज है, मैं बताऊंगा तो आधे घंटे इसमें चला जाएगा। बट द थिंग इज कि आपको बहुत सारी चीजें करना है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, हाँ, तो एक तो होता है पीच डॉक्यूमेंट हम कहते हैं, किसी भी शो का या किसी भी मूवी का। तो एक सबसे पहले आपको एक पीच डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। वो पीच डॉक्यूमेंट ही कम से कम 1 से 2 महीने का प्रोसेस होता है। उसके बाद में आप जो यंग राइटर्स होते हैं, मुझे एक्चुअली काफी राइटर्स के मैसेज आते हैं कि क्या करें, प्रोडक्शन का नंबर दो, प्रोडक्शन का कॉन्टैक्ट दो, फोन नंबर दो, ईमेल आईडी दो। प्रॉब्लम उसमें ये है कि नंबर देने के बाद भी, हाँ, बट द थिंग इज कि सी, अगर आपको महीने में या 2 महीने में एक मैसेज आता हो तो आप नंबर भी दे भी देंगे। अगर आप हर दिन आप एक प्रोड्यूसर का 10 लोगों को नंबर देंगे तो प्रोड्यूसर आपको ब्लॉक कर देगा। यू कैन डू दैट। तो एक सिंपल सा तरीका मैं ये बताता हूँ कि आई थिंक जितने भी राइटर्स इसको जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, उनको फायदा होगा। कि आपको एक 7-8 दिन लेना है आपके शेड्यूल से, और जितने भी शोज हैं, मूवीज हैं,
इन सबका आपको गूगल पे या इनके सारे अलग अलग ओटीटी चीज पे आपको ये चेक करना है कि इनके प्रोड्यूसर्स कौन है। एक बार एक आपको बड़ी सी मेरे पास ना एक पूरी एक एक्सेल शीट है जिसमें मैंने हर शो का प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर, चैनल सब कुछ लिख के रखा हुआ है। और गूगल है तो आपको एड्रेस का किसी का भी दिक्कत होता नहीं है। तो अगर आपने एक समझिए आप अगर एक ढंग की लिस्ट ही बनाएंगे, आपको 70 से 80 से 100 कम से कम प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे जिन्होंने अच्छा कंटेंट बनाया हुआ है। एग्जैक्टली, इन सबको होमवर्क पहले करना पड़ेगा। बहुत बहुत जरूरी है। देखो इंडिया में राइटिंग जो है ना, जो प्रॉब्लम मैंने एज अ पब्लिशर भी देखी थी कि ऑर्गेनाइज नहीं है। लोगों को लगता है बुक लिख दी और हो गया। आई मीन लिटरली मैं बता रहा हूँ कि जो टर्की को जो शो बना है तो उसकी मार्केटिंग के लिए आई वॉज इन अ वेरी बिग फाइनेंशियल लॉस पहले। तो आप गूगल पे भी अगर चेक करेंगे तो आई लिटरली सोल्ड माई ज्वेलरी एंड माई कार एंड आई अरेंज्ड अ बिग सम फॉर मार्केटिंग दैट बुक। तब जाके ये बुक एयरपोर्ट पे पहुंची, लोगों ने देखी और पढ़ी और शो बना है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी हम लोग क्या होता है ना, हम लोग एक ड्रीम वर्ल्ड में होते हैं कि हमने एक बुक लिख दी है, अब लोग पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर्स मुझे फोन करेंगे। वैसा हर किसी के साथ में होता नहीं है। तो आपको एक लंबा होमवर्क करना पड़ता है। आप सारे प्रोड्यूसर्स की लिस्ट बनाइए, आप एक पीच डॉक्यूमेंट बनाइए, उसमें एक अच्छी से आप सिनॉप्सिस लिखिए, अलग अलग शोज देखिए कि एक बुक होता है उसका तरीका बहुत अलग होता है, शो का फॉर्मेट बहुत अलग होता है। लाइक आपके बुक में एक क्लाइमैक्स हो तो चलेगा, बट अगर आप एक 10 एपिसोड का शो लिखते हैं तो आपको 10 हुक्स होने चाहिए हर एपिसोड के एंड में। आप पहले का एंड में कुछ अच्छा हुक देंगे तब अगर अगला कोई भी अगला एपिसोड देखेगा। तो एक प्रॉपर एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट बना के आप सारे प्रोड्यूसर्स को भेजिए, पर्सनली मिलिए, 2-3 महीने लगाइए। क्योंकि देखिए एक बार सक्सेस हो गया फिर पैसा ही पैसा है, सक्सेस ही सक्सेस है, दिस इज अ फैक्ट। तो उसके लिए आपको 3-4 महीने आपके लाइफ के देने पड़ेंगे। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंट्री बहुत मुश्किल है। एक बार एंट्री हो गई तो आप सेट हो बॉस। बट उस एंट्री के लिए वो आपको कोई भी घर सॉरी और वो भी अगर आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाते हैं, वो भी दो फिर तो ऑलरेडी अमाउंट इंक्रीज हो रही है। खैर ये वही है। ये मतलब देखिए फिल्म इंडस्ट्री में द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कैन यू इंटर इट। अगर आपके नाम का एक शो आ गया, एक मूवी आ गई अच्छे प्लेटफॉर्म पे, थिएटर में कुछ भी हो, तो फिर काम की कमी नहीं होती आपके पास में। लेकिन वहां पे जाने के लिए ना आपको आपके लाइफ के 3 महीने, 6 महीने, साल भर और काफी सारा इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ लगाना पड़ेगा। आई रिमेम्बर। तो ये होमवर्क से लेके प्रोसीजर सब कुछ जरूरी है। हाँ जी कुणाल सर, मुझे अभी पिछले हमने एक इवेंट करा था जिसमें जो है रंजीत से सही के डायरेक्टर आए हुए थे, कुलदीप भारद्वाज सर। उन्होंने कहा कि 14 साल तक मैंने ना गरीबी अपने आप को डाली है। अब वॉज फ्रॉम वेरी वेल ऑफ फैमिली, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए कि हाउ अपने आप को ग्राइंड कैसे करना है। तो आपने एक बात बड़ी अच्छी कही और इस चीज से मैं कि लोग क्या होता है बीइंग एज अ राइटर, है ना, हमने लिख दिया जो है ना, उसके बाद प्रेमचंद और सुदर्शन की श्रेणी में हम ऑलरेडी हैं, आएंगे प्रोड्यूसर साहब और उसके बाद जो है हमारा राइट। तो वो चीज नहीं, कहीं ना कहीं मार्केटिंग का एक रोल है। और कहीं ना कहीं मुझे अपने खुद का एक कॉलम याद आता है सीओ मैगजीन के साथ, उसमें मैंने यही चीज की थी कि ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। और खास करके न्यूबी ऑथर्स या जो बच्चे, जैसे अभी हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनमें से कई लोग चाहते हो कि नहीं राइटिंग में करियर बनाना है। तो राइटिंग में करियर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक ओरिजिनल कंटेंट भी लिखना पड़ेगा। और खास करके फिक्शन में कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो क्या इससे पहले लिखा गया, अगर लिखा गया तो मेरा टेक क्या है। और जैसा आपने बताया कि वेब सीरीज की एक बड़ी अच्छी सी बात है कि आपको हुक रखनी होगी। चैप्टर वाइज जो है इस तरह से होगा या एपिसोड वाइज इस तरह से होना चाहिए कि अगला एपिसोड देखने के लिए आदमी ऑलरेडी परेशान हो, यार मुझे देखना है चाहे जो भी हो जाए। ऐसा नहीं कि लास्ट में एंड जाके हम देख रहे हैं। बहुत सारी बातें रहती हैं। खैर कुणाल सर, एक सवाल था मेरा। जैसा कुणाल सर ने बताया कि इन्होंने बुक का प्रमोशन किया था, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग प्रमोशन किया था, तो वो एक प्रोड्यूसर बुक स्टोर में गए, विजिट किया और फिर इनकी बुक ली, फिर इन्हें कांटेक्ट किया। तो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग प्रमोशन तो होना ही चाहिए आई थिंक, क्योंकि अगर ये ब्रांडिंग प्रमोशन ही नहीं करते तो बुक स्टोर में बुक नहीं जाती और वो विजिट करते तो बुक नहीं देख पाते। एग्जैक्टली। ओके कुणाल सर, मेरा एक क्वेश्चन है, इंदौर इश्क का सीक्वल हम कब देख रहे हैं? यार इंदौरी इश्क का एक्चुअली हो क्या गया है कि वो शो इतना ज्यादा चल गया है कि एवरीवन एसोसिएटेड विद हिज हैट इज बिजी इन समथिंग एल्स। तो शुड एज एन ऑडियंस वी शुड टेक इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली? यार हमारे लिए तो अभी पॉजिटिव है, ऑडियंस के लिए अभी 200 मिलियन व्यूज हुआ था। 200 मिलियन 200 मिलियन। तो बट आई थिंक एनीवेयर, आई मीन अभी ना ना कोई डेट्स वगैरह कंफर्मेशन है नहीं है, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ वाइल्ड गेस। फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर ऑफ 2023 इट शुड कम। इट्स जस्ट अ गेस एज ऑफ नाउ।
ओके, सो वी आर नॉट श्योर कि हमें इंदौर इश्क का जो सीक्वल मिलेगा नहीं मिलेगा। ओके, एक सवाल है मिलेगा मेरा। ये श्योर है, बट कब अच्छा, मिलेगा ये नहीं है। ये श्योर नहीं है। ओके, जी जी। ज्योति मैम, आपसे एक सवाल था। हाँ, आपने काफी हाँ। स्टोरीज करी हैं, और जब स्क्रीन राइटर साथ में बैठे हैं तो एक सवाल मेरा ये भी है कि काफी ट्रेंड होता है, खास करके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आने के बाद से हम ये देख पा रहे हैं स्पिन ऑफ्स का। और ये आप तो लंदन से आई हुई हैं, यू हैड बीन टू लंदन एंड यूएस फॉर मल्टीपल इयर्स। ओके, तो स्पिन ऑफ हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे आपकी स्टोरी? क्योंकि काफी स्टोरीज मैंने आपकी पढ़ी भी है, तो मुझे लगता है किसी कैरेक्टर को उठा के उसकी अलग स्टोरी बनानी चाहिए। आई थिंक इसी को स्पिन ऑफ कहते हैं, या यूएस में अलग कहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भाई, और आप लोगों से ही मैं सीख रही हूँ पहले तो तो जैसे थोड़ी देर पहले विकास जी ने कहा था वो हमसे सीख रहे हैं लिखना, तो ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, क्योंकि वो खुद गाइड कर रहे हैं जब इतने लोगों को। एंड थैंक्स टू लिटेरिया इनसाइट, आप लोग ऑलरेडी काफी लोगों को गाइड करते हो। और इसमें बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, एक और बात जोड़ना चाहूंगी जो कुणाल जी ने सच में बहुत अच्छी बात कही थोड़ी देर पहले, कि एज राइटर्स हम जब एक किताब लिखते हैं तो एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, एंड देन रियलिटी हिट्स, और फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट ये जानकर तसल्ली हुई जो इन्होंने कहा कि जो मार्केटिंग ब्रांडिंग है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करके फिर हम हतोत्साहित होने लग जाते हैं कि नो इट्स नॉट पेइंग ऑफ, व्हाट्स द यूज ऑफ, एक वो फेज आता रहता है राइटर्स की लाइफ में। तो इन्होंने जो कहा अभी, जो मोटिवेट किया, तो लगता है कि नहीं, एवरीथिंग इज वर्थ इट एंड वी शुड जस्ट कीप गोइंग ऑन. So that's quite an inspiration for the new writers in the town actually. So thank you so much for that. And Nitish ji, coming back to the question, spin-off, yes, I think हो सकता है, क्योंकि मेरी एक कहानी है जो The Realms of Human Emotions में है, और उसमें आपने अगर ध्यान दिया हो, आनंदी में भी एक चैप्टर है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुड़ा हुआ है उस कहानी से। तो मुझे लगता है शायद उन दोनों कहानी, उस चैप्टर और उस कहानी के जो किरदार हैं, उनको लेकर के शायद एक स्पिन ऑफ आगे हो सकता है, ऐसा मैंने सोच रखा है। एंड फिंगर्स क्रॉस्ड एंड डोंट नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बट शायद हो सकता है। तो वो आनंदी, वो दोनों ही किताब में से वो सेम कैरेक्टर जो है आनंदी से और द रेल्म्स ऑफ ह्यूमन इमोशन से शायद आगे देखने को मिल सकता है। नीतीश, आपका माइक ऑफ। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम संखदीप सर। सर, Yes. नॉर्मली फिक्शन में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे काफी सीक्वल्स, प्रीक्वल्स, स्पिन ऑफ का बहुत चलन रहता है। ओके, सॉरी, एक्चुअली, सो व्हाई देयर इज नॉट अ ट्रेंड ऑफ सीक्वल्स इन नॉन फिक्शन? संदीप सर, आर यू एबल टू हियर मी? Yeah. Can you hear me? Am I audible to you? Yeah. So you were talking about the sequel aspect. Am I audible? Yeah, you're audible. You're audible. Of course, audible. Okay. So you were talking about the sequel aspect in terms of the non-fiction category. So when we are doing non-fiction, for instance, I can give you, for instance, the experience of my book. For instance, if I have written, for instance, Mastering Your Mindset or the Psychology of Success. The Psychology of Success is a nice add-on to the Mastering Your Mindset. It's not really a sequel, but it's a nice add-on. So it's not a direct spin-off. You cannot do direct spin-off, and the reason it's not in vogue is because fiction is a story. And so you can actually take one thing to the other part, and in that way the spin-offs are very easy to do. And it also piques a lot of interest in the minds of the readers and the viewers. But non-fiction can be a block in itself. It can be monochromatic. It doesn't have to be very heterogeneous. So in that sense, in that aspect, I believe that spin-offs are not that popular with non-fictions, and it is much more popular with fictions. Yeah, of course. So before ending the session, actually, sorry, I think. Yeah, Nitish ji, before you end, एक सवाल मेरा था, if the format allows, मैं कुणाल जी से एक सवाल पूछना चाह रही थी, अगर टाइम अलाउ करता है तो। नहीं, of course. Okay. हाँ, कुणाल जी आपसे ये पूछना चाह रही थी, although it's a known fact, but फिर भी आपसे जानना चाहूंगी, what is more lucrative, novel writing author बनना, या फिर being a script writer? इसमें दो चीजें हैं, whether is your satisfaction of being writer and the money you make out of it.
So if I have to think about how I'll run my family and earn money, so I'll always go for screenplays because I know कि मैंने ये लिख दिया है तो इतना पैसा मुझे मिलना ही है. वो शो है, फिल्म है, वो हिट जाएगी, फ्लॉप जाएगी. Very honest and very relatable answer. Very, yeah, exactly. Very honest. But book का क्या होता है ना, you don't know how much money you are putting. Like मैं जो ड्रीम वर्ल्ड का जो बता रहा था, तो तब मेरी पहली बुक आई थी, I was hardly 21 at that time. और वो होता है ना कि बुक पब्लिशर ने ले लिया ना, I was like कि अभी अगला चेतन भगत में ही है. तो एक और मतलब I was like कि अब तो कुछ करियर वरियर कुछ करना नहीं है, जॉब वॉब सब छोड़ देंगे, अब तो राइटर बन गए. और फिर when the reality comes to you, तो 1.5 साल में मुझे मिली थी 7,000 रुपए की रॉयल्टी. तो इसलिए if you talk about commercial things, बुक में भी काफी पैसा है, नो डाउट. बट बुक का होता है कि जब तक आप एक सक्सेस पॉइंट हिट नहीं करते, जब तक आपका कोई भी एक बुक है वो 50,000 से 1 लाख आपका रीडरशिप नहीं बन जाता है, तब तक इट्स वेरी टफ. बट यही है, अगर आप क्रिएटिविटी सेटिस्फैक्शन एज अ राइटर की बात करोगे तो द बुक्स इज व्हाट आई प्रेफर. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ राइटिंग, तो स्क्रीन प्लेज वुड एनी टाइम वर्क फॉर मी until my books start selling in lakhs. Very well said. Thank you so much. So thank you IIT Bombay, thank you Kunal sir, Sankhadeep sir, Vikas sir, and Jyoti ma'am, and thank you guys for such an interactive session. Thank you So much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.